Yes. So let us see the next topic in this chapter. Okay, so we are going to discuss about the energy in SHM. Okay, so let us discuss about. Okay, अभी है audible? हेलो, अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। सो देखो, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम फेज के बारे में, तो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द एनर्जी इन SHM. So let us see. Yes, as we know that there are two types of energies in SHM, that is potential energy and kinetic energy. Whenever the particle is performing, suppose an SHM, suppose this is a spring and this is a block of mass m, then this block has a potential energy which is given by the formula half k x squared, where k is nothing but the force constant, and we already have derived that k upon m is nothing but omega squared. So we can also write this k to be equal to m into omega squared. So if we replace it by that, then we get this formula for potential energy to be simply half of m omega square into x square. Correct है? तो ये बात याद रखो ठीक से. And at the same time, kinetic energy here, capital K, we can see it will be given by the formula half into k into a square minus x square, where a is nothing but the amplitude here. Okay, so that we can get this simplified as k के बदले अगर फिर से हमने m ओमेगा स्क्वायर डाल दिया तो हमको मिल जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर into a square minus x square in this way. And also we can get the total energy here. The total energy, or either we can denote it by T or we can denote it by E. That is the full energy in SHM will be actually equal to half k a square, where a is the amplitude, and also this can also be expressed as half m omega square into a square. Remember, so this is going to be actually the formula for the total energy in SHM. Remember, this is the potential energy, this is the kinetic energy, and this is the total energy in SHM. So we can clearly learn all these three formulae, and also we can express these formulae in terms of the time. Okay, because these formulae are expressed in terms of distance. If you see carefully, x के फॉर्म में ये रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी x है. अभी चलो ठीक है, इसके अंदर x नहीं है क्योंकि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, बट यू कैन एक्सप्रेस दिस फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ x, और सॉरी टाइम. तो टाइम के फॉर्म में अगर इनको हमको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? It requires to be known whether the particle starts from extreme position or it starts from mean position. If the particle starts from mean position, see here the expression for kinetic energy, potential energy and kinetic energy when the particle starts from mean position. Okay, तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हमको पता है ऑलरेडी अल्फा 0 होता है, जैसे कि हमने अभी भी लास्ट टाइम देखा था. तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा 0 होने की वजह से इक्वेशन just get modified. The equation of SHM is modified as x is equal to a sin omega t, ऐसा बन जाता है, जिसके कारण हमको मिलता है U, that is the potential energy of SHM, to be simply equal to half into k into x square, where this x can be replaced by this a sin omega t here, and we can get this as a sin omega t और उसका होल स्क्वायर. करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि हाफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. Remember this correctly. This is going to be the formula for finding the potential energy in case when the particle starts from mean position. And at the same time, the kinetic energy can also be obtained to be simply k is equal to half into k into a square minus x square, where x can be replaced by this a sin omega t once again, and we can get that a square
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, करेक्ट है। जिसमें से अभी यहाँ पे क्या है ना कि a स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन, सो इफ यू टेक दिस a square common, then we get is half k a square, and what we are left inside 1 minus sine square omega t. And as we know that 1 minus sine square means cos square, so we can get finally that the potential energy, sorry, kinetic energy is given as half k a square into, अब यहाँ पे 1 minus sine square omega t can be replaced by cos square omega t, and hence we can get this as cos square omega t as a simple thing. So that means we can just summarize this result in this way. And also the total energy, how can we get that? The total energy can be obtained to be simply equal to E is equal to half k a square, as it is already there. Okay, उसको हम टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब टाइम इस फॉर्मूला के अंदर है ही नहीं। और ये टोटल एनर्जी जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। इसलिए यहाँ पे ई जो है वो हाफ के स्क्वायर के बदले आ गया। अभी अगर हमने इस हाफ के स्क्वायर के बदले के ए स्क्वायर के बदले अगर ई डाल दिया, इवन इस हाफ के ए स्क्वायर के बदले भी अगर ई डाल दिया, तो हमको दो सेपरेट इक्वेशंस मिल जाते हैं जो हम याद रख सकते हैं आराम से। देखो ठीक से, these two equations can be easily remembered in this way. So the potential energy here is actually going to be E into sine square omega t. See this here. Just remember this correctly. And the kinetic energy here will actually be equal to again E into cos square omega t. तो देखो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इजीली याद रख सकते हैं आराम से। दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बोथ ऑफ देम डिपेंड अपॉन ई। ई मतलब क्या? टोटल एनर्जी। सो दे आर द फ्रैक्शंस ऑफ टोटल एनर्जी ओनली। एंड इफ सपोज बाय चांस वी ऐड दीज टू अप, तो u और k अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो u प्लस k विल बिकम एक्चुअली, अब u का वैल्यू कितना है? देखो ये पूरा है u का वैल्यू, अगर हम ये और ये जो k का वैल्यू है वो अगर ऐड करेंगे तो हमको e कॉमन मिलेगा। सो इफ यू टेक e कॉमन देन वी कैन गेट दिस sin square omega t plus cos square omega t left inside the bracket, which happens to be 1, and hence we can prove that u plus k becomes actually e, which is as expected. तो ये तो होना ही था। तो याद रखो ठीक से कि this u is expressed in terms of the time in this way, and k also is expressed in terms of the time in this way. Now at the same time, if the particle starts from extreme position, ये मीन पोजीशन के लिए हो गया। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो ऐसे हालत में क्या होगा? देखो ठीक से, so in case when the particle starts from extreme position, so what is the value of alpha? In case alpha is equal to pi by 2, correct है? And because of that the value of x or equation of x get modified and it becomes x equal to a sine omega t plus pi by 2. And as we know that omega t plus pi by sin omega t plus pi by 2 मतलब ही cos omega t, तो इसलिए हमको मिलता है x equal to a cos omega t as a final. And since this x is equal to a cos omega t, so the potential energy can be obtained to be simply equal to half k x square, where x can be replaced by this value, that is a cos omega t, and we can get it as half k into यहाँ पे a cos omega t का होल स्क्वायर, जिससे वो बनता है पोटेंशियल एनर्जी which is going to be equal to half k into a square cos square omega t. And at the same time the kinetic energy also can also be expressed in this way. हेलो, हाँ सर।
Yes, okay. So basically the kinetic energy can be obtained to be equal to half into k into ब्रैकेट में क्या आने वाला है a square minus x square, but x is nothing but this, right? A cos omega t. So if we replace it by that, then we get this a square cos square omega t, and hence we can get this as k is equal to half into k into a square and 1 minus cos square omega t. And since we know that 1 minus cos square omega t means sin square omega t, so we can get finally that half k a square into sin square omega t. So see the difference. What happens in this case is when the particle starts from extreme position, we can say that the potential energy actually becomes E. देखो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू इसको हम E बोल सकते हैं कि नहीं? E मतलब टोटल एनर्जी, and that is multiplied by cos square omega t, right? And at the same time the kinetic energy here, once again we can just replace this whole value by E, and hence we can get it as k is simply equal to E into sin square omega t, correct है? So this becomes the two formulae for potential energy and kinetic energy in case of SHM. Just see the difference. The expressions are just interchanged. This is for potential energy and this is for kinetic energy. Whereas in case when the particle was starting from mean position, the sign was present in the potential energy and cos were present in the kinetic energy. So that is just interchanged. तो ये interchange सिर्फ हो जाता है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. Okay, and now if we just check the graphs, अगर ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं तो हम देख सकते हैं आराम से. Yes, if we try to draw the graph of the potential energy and distance, तो कैसे मिलेगा बताओ? ये देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर होता है, बराबर? जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में जो ग्राफ है तो वो ऐसा कुछ बनेगा. ये देखो, this is actually going to be the graph between potential energy and x, no doubt. It's a parabola. Okay, it's called as a parabola, remember. And also if we draw the graph between kinetic energy and x, then we can get this simplified as k is equal to half ka square minus x square, करेक्ट है? ये हमको इस तरह का नेचर मिलता है, जिसकी वजह से जो सेम ग्राफ जो है वो ऐसा हमको मिलता है. That will be inverted parabola like this. Okay, inverted parabola, this is called. ये भी parabola ही है, but it is inverted. Inverted in the sense it's opening downwards and shifted upwards. तो ये इतने डिस्टेंस के साथ वो शिफ्ट किया हुआ होता है. अब इसको थोड़ा और हम एलाबोरेट करेंगे ना, थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे, ये टर्म्स अगर ओपन करेंगे ना तो हमको मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के x square, correct है? And this will be the in general expression, and we can also express it as k is equal to ये जो half k a square है हमको पता है already, it is E, बराबर? Capital E, that is the total energy in SHM, minus half k x square, and hence we can get this simplified as k is equal to E minus something into x square. That means it is going to be a inverted parabola, and this distance is actually going to be E here, remember. And also here also in this case this distance is going to be E here, the maximum potential energy which is going to be E. And remember that the potential energy is minimum or zero at the middle position, mean position, and it becomes maximum at the extreme positions, चाहे वो right extreme हो या left extreme हो. But kinetic energy becomes maximum at mean position and becomes zero at the extreme positions. ठीक है, तो extreme positions पे ये potential kinetic energy zero बनता है और mean position पे potential energy zero बनता है. extreme position पे potential energy maximum बनता है. ये देखो, ये maximum value है potential energy का extreme position पे जो बनता है, and kinetic energy extreme position पे kinetic energy actually zero बनता है. और potential energy का maximum value और kinetic energy का maximum value सेम ही होता है, जो कि हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होता है. याद रखो ये बात ठीक से.
and even we can also express it in terms of u here. ये जो इक्वेशन है इसको हम k is equal to e minus u या तो फिर u plus k is equal to e ऐसा भी लिख सकते हैं. And because of that, if we try to draw the graph between k and u, then it will be a straight line which is decreasing like this. ठीक है, because both of them add up to e. So this type of graph will be obtained here in this way. चलो ठीक है, अभी हम अगर ग्राफ की बात करेंगे, if you want to find out the graph between k and time here or u and time here, because u का एक्सप्रेशन हमने देखा था ऑलरेडी. अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन है तो उसका ग्राफ बनता है u is equal to e into sin square omega t. करेक्ट है? Because of that we can just get this simplified as. अभी इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमको इस तरह से कुछ मिलेगा. देखो ठीक से, जिसमें ये साइन स्क्वायर के वेरिएशन की वजह से देखो क्या होगा. This type of graph will be obtained here. So this value is e. Maximum value here is going to be e here, and at the same time sine square, because of this sine square the graph will just oscillate up and down, but it will never go into the negative side like normal sine. Normal sine कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं? तो वो नेगेटिव में भी जाता है, बट यहाँ पे वो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा क्योंकि it is going to be in the positive always. Why? Because it is the square here. ये स्क्वायर की वजह से वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. करेक्ट है? Yes. And at the same time, if you want to find out the graph of kinetic energy here with respect to time, then we can get this kinetic energy is equal to e into cos square omega t. करेक्ट है? जिसके कारण यहाँ पे ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगा, बट सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेगा बस, बाकी सब सेम. ये देखो इसका आधा पार्ट जो है वो इस तरफ लाई करता है, ऐसा हम दिखा सकते हैं. ठीक है? So this type of graph will be there between k and t. So t is the time here in this way. तो k का जो है टाइम के हिसाब से ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, जो कि फिर से साइनस वेरिएबल होता है, बट इट विल अगेन नेवर गो इनटू द नेगेटिव साइड हियर. नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है. भले cos ओमेगा t पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है. ठीक है, बट दिस विल हैपन only when the particle is starting from mean position, remember. But if suppose the particle is starting from extreme position, then u itself we know that it is e into cos square omega t. करेक्ट है? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है तो वो बनेगा इस तरह से, जिसमें हम देखेंगे कि it will start from mean top point and just vary like this. We can show its half part in the back side like this. But here in this case the kinetic energy happens to be e into sin square omega t. करेक्ट है? And because of that we can get this simplified as, ये जो पूरा है तो ये इस तरह से आएगा हमका काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर साइन स्क्वायर है. साइन मतलब स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, एंड दैट्स व्हाई द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस वे. अभी इसमें एक बात नोट कर सकते हो आराम से कि नॉर्मल टाइम पीरियड जो है, नॉर्मल पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होता है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का जो टाइम पीरियड होता है, वो अगर हम ठीक से नोट करते हैं तो देखो नॉर्मल पार्टिकल का ग्राफ कैसे होगा. इफ यू जस्ट कंपेयर दिस ओरिजिनल ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसको अगर हम सपोज x जो डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमको इस तरह से मिलता है. देखो ये फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही रहेगा, नो डाउट. ये जो if we draw a perpendicular line here in this way, then we can say the equation of motion of particle or the equation of graph of the displacement of the particle will be like this. Do you agree with this? Yes, again here it will be like this.
एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे ही चलता रहेगा। बट अभी इसकी वजह से देखो, इस पार्टिकल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, कहां से कहां तक हम गिनेंगे? टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल विल बी काउंटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन टू दिस पॉइंट हियर, करेक्ट है? ये हो गया उसका पीरियडिक टाइम, करेक्ट है? यस। अभी देखो ठीक से, अगर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो अगर देखेंगे तो ये आधा ही हो गया, इतना ही हो गया कि नहीं? जबकि पार्टिकल का टाइम पीरियड इतना है और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन का टाइम पीरियड सिर्फ इतना है। सो वी कैन से दैट द टाइम आफ्टर विच द पोटेंशियल एनर्जी जस्ट वेरीज, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, okay, so the time after which the potential energy varies is actually half of the time period of the particle. So we can say that the time period of potential energy is t by 2, ये बात याद रखो ठीक से। And if you want to find out the frequency of variation of potential energy, it is again 2 times of n, where n is the frequency of particle itself. क्योंकि अगर पीरियड जो है वो अगर आधा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? जरूर डबल होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक जब तक पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब तक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 बार वेरी हो जाता है, 2 बार रिपीट कर लेता है खुद के वैल्यूज। तो इसलिए ये एक और ये दूसरा, ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि दो बार वो वाइब्रेट हो गया जब पार्टिकल ने एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो ये बात सामने रख के हम ये बोल सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी कोई दूसरा अलग नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के भी बारे में ऐसा ही हम बोल सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर जस्ट डबल टू दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे n मतलब क्या है? पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है, और ये 2n क्या बनता है? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी बनता है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने जैसा है, और याद रखो इसको ठीक से। टाइम पीरियड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी in SHM is always half of the time period of particle, and the frequency of potential energy or kinetic energy is just double to that of the kinetic energy frequency of the particle. So ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। चलो ठीक है। In some situations the potential energy of the particle is not zero at mean position, remember। तो इसके लिए उसकी वजह से मतलब कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे जीरो नहीं बनता है। ये देखो ऐसा उसका ग्राफ बनेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एट मीन पोजीशन बट इट विल बी मिनिमम, एटलीस्ट उतना तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी मिनिमम एट द मीन पोजीशन, and the maximum value of potential energy in that case will not be equal to the maximum value of kinetic energy in this case। तो उस केस में u नॉट ये जो है ये है मीन पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और um और चलो um is going to be the maximum value of potential energy in this way। so इसके लिए हम एक सिंपल सा इक्वेशन बना सकते हैं कि u नॉट plus u is the instantaneous potential energy of the particle, which should be exactly equal to the u naught plus u plus k should be actually equal to the total energy of particle। अगर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, तो ऐसे हालत में हमको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी कंसिडर्ड एज u naught, and hence in that case we can say that this u naught plus u plus k becomes actually equal to E। ये वाला इक्वेशन उस केस में हमको यूज करना होगा जब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं रहता है तो, ठीक है। बट इन दैट केस वी कैन आल्सो से दैट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन is the maximum value of kinetic energy, ठीक है। we can call it as km। so km मतलब maximum value of kinetic energy। so ये हम समझ सकते हैं। चलो ठीक है, that is the just simply the law of conservation of energy we can say। yes, the next topic here is about the pendulum।
simple pendulum. So in this case, suppose this is a simple pendulum, and suppose it is stretched through some distance and just released. It performs the linear SHM along the length x. यहाँ पे वो x डिस्टेंस पे अगर खींचा उसको हमने और छोड़ दिया तो इस तरह से वो आगे पीछे मोशन परफॉर्म करेगा। और इसके ऊपर जो फोर्सेस काम करते हैं तो वो फोर्सेस है, एक तो mg उसका वेट, दूसरा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड इफ वी रिजॉल्व दिस mg इन टू कंपोनेंट्स, then one component of mg acts along the tension, but other component of mg acts towards the mean position, and that force is actually given by mg sin theta. तो ये mg sin theta जो फोर्स है वही यहाँ पे SHM के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये थीटा छोटा होने की वजह से हम यहाँ पे माइनस mg इंटू थीटा ले लेते हैं। sin theta is approximately equal to theta and theta is the angle is always equal to the arc upon radius। तो अगर हम ये बात यूज करेंगे, ये अगर एंगल थीटा मान लेते हैं तो this angle theta will be actually arc, that is x, upon radius, that is length of the pendulum, and hence we can say this will be force F is equal to minus mg into x upon L, where L is the length of the pendulum and x is the displacement from the mean position here. So from this only we can get to know that this force is directly proportional to the displacement and also the negative to it. So इससे हमको पता चलता है कि F is proportional to minus x, and hence we can find out we can prove that this motion of the pendulum is a SHM। इससे ही प्रूव होता है कि पेंडुलम का मोशन SHM है। और इससे भी आगे जाके एक्सेलरेशन अगर हम ढूंढ के निकालेंगे उसका, तो एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू द फोर्स अपॉन मास, and if we replace this value of force here, then we can obtain to be equal to mg upon L into x upon m as it is, so that this m gets cancelled, and what we are left with is acceleration is equal to minus of g by L into x, and hence we can just equate this with acceleration is equal to minus omega square into x. That is the equation for acceleration in case of the yes। So in case of the SHM, तो SHM के अंदर का जो acceleration का expression है तो उसको यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हमको मिल रहा है इसमें से, ओमेगा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू g by L, and hence omega actually becomes root of g by L, and hence we can get period of oscillation to be simply equal to 2 pi by omega, but here omega can be replaced back so that we get this t equal to 2 pi root L by g. This is going to be the actual equation for period of simple pendulum. Remember, this tells us simply that the period of simple pendulum is directly proportional to the root of length of the pendulum, and also this period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of gravity, acceleration due to gravity. So here all the factors which affect the gravity will just affect the period of simple pendulum. Remember, तो जितने भी सारे फैक्टर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे फैक्टर्स पीरियड को अफेक्ट करेंगे बिल्कुल, और लेंथ के ऊपर वो स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है पीरियड डायरेक्टली, व्हिच मींस एक्चुअली दैट देखो L जो है वो अगर डबल हो जाए तो पीरियड जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर 4 टाइम्स हो जाता है तो तब जाके पीरियड जो है वो सिर्फ डबल होगा, ये हमको समझना है। अगर लेंथ 9 टाइम्स हो जाता है तो उस केस में पीरियड जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स होगा, तो ये हमको समझना है। So that means that t is proportional to square root of L, and also that if suppose the length is increased in percentages, so percentage change in period will actually be equal to into 100 delta t upon t into 100, मतलब percentage change in t will be actually equal to half of the percentage change in length, so delta L upon L into 100. This is called as a percentage change in length, and this is called as a percentage change in period. So we can say that the percentage increase in t is actually half of the percentage increase in length L. तो ये अच्छी तरह से याद रखो ठीक से, जिस परसेंट से लेंथ इंक्रीज होगा
उसके आधे % से पीरियड इंक्रीज होगा। लेकिन ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इंक्रीमेंट जो है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 10। ओके, 10 से छोटा होना चाहिए वो, तभी ये हमको करने आएगा। तो ये बात याद रखो ठीक से। You have to be sure that the percentage change in length should be less than 10. Then and only we can use this. Otherwise not. Otherwise we have to go for regular method. Normally हमको जो जैसे percentage हम निकालते हैं वैसे निकालना है, याद रखो ठीक से। और इससे भी आगे जाके if we talk about the graph between t and l, then it will be like, अभी जो देखो, अगर t proportional to root l है तो इसका ही मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसको l is proportional to t square, right? And since L is proportional to t square, the graph between L and t will be a parabola, just like y is equal to x square. So this type of graph will be there, which is symmetric about non-squared axis. मतलब ये L axis के about वो symmetric होगा, ऐसा वाला parabola हमको मिलेगा। और obviously अगर हम ये interchange कर देंगे, t यहाँ पे डाल देंगे और length अगर यहाँ पे डाल देंगे, तभी भी कोई problem नहीं, ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा, which is symmetric about L axis once again. तो कैसे भी करके याद रखो ठीक से कि it should be symmetric about non-squared axis. Okay, जो जिसका स्क्वायर नहीं है उसके अबाउट वो सिमेट्रिक होगा, उस तरफ उसके अबाउट वो आगे ऊपर नीचे सिमेट्रिक होगा इस तरह से। तो ये बात याद रखो ठीक से। दिस इज द ग्राफ बिटवीन t and L. Yes. And also if we draw the graph between t square and L, then it will be a straight line, no doubt, because t square is proportional to L and the constant of proportionality between them will be the slope of that graph. Even the graph between t and root L will also be a straight line, no doubt, and its slope will be the constant of proportionality between t and root L. बिल्कुल, तो यह बात अच्छी तरह से याद रखो। अभी और एक बात कि इसमें एक बात क्लियर करो कि the period of simple pendulum doesn't depend upon the amplitude of SHM. ठीक है, amplitude of SHM is not involved at all here. ये समझ सकते हो ठीक से। तो एम्पलीट्यूड कितना भी ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोवाइडेड दैट दिस थीटा शुड बी लेस देन 10 डिग्री, इन दैट केस एम्पलीट्यूड डजंट मैटर। इवन ये भी हम समझ सकते हैं कि द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। तो मास के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करता है, मास चाहे क्या भी हो, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज करने के लिए तुमको कभी कोई क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि इफ सपोज द पेंडुलम ऑफ 1 किलोग्राम ऑसिलेट्स विद 2 सेकंड्स, then what period will the pendulum of 4 किलोग्राम will oscillate with? तो मतलब मास चेंज कर दिया ना, तो मास चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मास पे वैसे भी पेंडुलम का पीरियड डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात हमको अच्छी तरह से याद रखनी है। The period of simple pendulum doesn't depend on the mass and also it doesn't depend on the amplitude of SHM. And at the same time, the formulae for potential energy and kinetic energy of the pendulum can also be obtained to be simply equal to, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम कितना होगा, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी, विच कैन आल्सो बी रिटन टू बी इक्वल टू, यस, सो अभी ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी जी बाई एल, तो वो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम टू बी सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू जी बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से कि half of mg x square upon L, no doubt. And at the same time, the kinetic energy can also be found out by using the same formula, similar formula, that is k is equal to half of m omega square into a square minus x square, where omega square can be again replaced by g by L here. तो याद रखो ठीक से, पेंडुलम के लिए ओमेगा स्क्वायर माना g by L होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हाफ m g by L into a square minus x square, and at the same time the total energy can also be written to be equal to half of m omega square into a square, where omega square can again be replaced by g by L, and hence we get this m g by L into a square as a final, correct है। So this is actually the formula for potential energy and kinetic energy of the pendulum.
and all the other formulae in SHM can also be equally applicable here in this case of the pendulum. So in the next lecture, we will see about the practical pendulum, or it is also called as a physical pendulum. तो physical pendulum के बारे में हम next time देखेंगे. चलो ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.